Hello, 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 So very good afternoon to all again, and the respected resource person of today's third session, Dr. D.M. Sultanwal. Sir, we were having a lunch break, so my so other participants would be YouTube live. Very good afternoon to all again. Am I audible to all clearly? बहुत ज्यादा आपकी आवाज Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So, sir, shall we start the session? अभी 5 मिनट और है Okay, we have 5 minutes more. So let's wait for 2 minutes till the participants join. हाँ let them join. Yes, sir. Yes. Sir, I am a great fan of yours, Thank you, and sir. I have been attending your sessions till my PhD. Thank you. Since 2011, I was doing my PhD from GJU. So there I have attended your sessions, Thank you. and after coming into teaching also, there also I have been a participant of your expert talk. Thank you. So it's a very privileged day for us that we would be listening you, and we would be taking benefits from your wisdom and your expertise. Thank ये हुड्डा मैडम के सौजन्य से ही हो रहा है कि आपके दर्शन हुए हैं. बिल्कुल सर, बिल्कुल. मैम इज great effort to call upon great researchers and academicians on this platform like you, sir. We all are thankful to her for her. Yes. पार्टिसिपेंट में दोबारा से एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि जब आपके फोन पे कोई कॉल आती है तो आप गूगल मीट से एग्जिट हो जाते हो. उसके बाद आप बार बार मुझे मैसेज डालते हो कि मैडम एंटर नहीं कर पा रहा. तो उसका ये रीजन होता है कि यहाँ पे 100 पार्टिसिपेंट्स ही हो सकते हैं. आप जैसे ही जाते हो आपकी जगह कोई और आ जाता है. तो प्लीज अगर आप ऐसे आप एग्जिट कर जाओ और आप एंटर ना कर पाओ तो यूट्यूब लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रखा है. आप यूट्यूब लिंक से यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हो. प्लीज बार बार ये सेम मैसेज डाल के तो परेशान मत कीजिए प्लीज. Yeah, please, it's a humble request that try to not pick up the phone calls during the session. It would be only open in half an hour. And once you pick up the call, the meeting would be ended from your side, and you would not be able to join again. That is because of number of participants only completed in the group. So rest of can listen the session on YouTube live, and the attendance link will be shared on YouTube live also, or here also in the chat box.
Okay, I'll share the attendance link again. Menika madam, can I share the attendance link again on this group? Yes, sir, sure. Yes, sir, sure. Okay. Sir, now meeting is full. We can start now. Okay, ma'am. Just let me share the attendance, then I'll. Okay. Okay, sir. Participants, please, I have shared the attendance link on the in the chat box. So here we start with the third session. Okay. So before we start, I would like to introduce today's resource person, Dr. D.M. Sansalman. So about his academic and career record, he has retired as head and dean from Faculty of Education, Devi Ahilya University, Indore. He holds MSc in Physics and PhD in Education degrees. His areas of specialization are research methodology, experimental design, advanced educational statistics, educational measurement and evaluation, educational technology, science and education, and information and communication technology. Sir has invented Zerk technology, multiple discriminatory type item, multiple answer type item, moral discussion model, and educational training. He taught business system methods and quantitative techniques in Indian Institute of Management, Indore, from 2004 to 2008. He also taught business research methods in Indian Institute of Foreign Trade, that is IISP, New Delhi. He has published extensively both in Indian and foreign journals of faculty. And after his superannuation, he had conducted 180 research works of 7 to 15 days on different areas of research methodology, statistics, and use of SPSS all over India. It's a very big number, sir. He has given 995 webinar lectures, so 2 or 3 hours. So really very impressive and a great contribution of yours to the society or in the education area. So, sir, we are very, very thankful that you are here with us, and we will be listening you. We will be learning from your wisdom. So, on the behalf of HRDC and MDU fraternity and the participants, I welcome you in this third session. Sir, the mic is yours now, and you can start interaction with the party. Thank you, sir. Thank you very much. Let once again, at the outset, I must express my gratitude to the HRDC, MDU University Rohtak, and especially the people working there, Professor Huda and other friends. I'm grateful to you that you provide this platform to help some of my young friends. I don't know how much I'm able to help you out, but I try my level best. Dear friends, yesterday I was talking about the tools, and I have given you some of the information regarding that. And today I'm supposed to take the steps of development. As I told you that there are standardized and unstandardized tools. So development has to be there. But those tools which cannot be standardized, then we will not go ahead with standardization. I will tell from which step the standardization will start. Now, before I do that, I just like to ask you that here is one question. Can any one of you give me the answer of this question?
You can write your answer in the chat box. I will see from there. Now, no one has given any answer so far. So you can see the question and you can take a photo of this question and you can think of the answer and you can give me the answer. So I go ahead. The first step is, because you have a variable in science, each variable has got one and only one definition. If you have kinetic energy, it has only one definition and everybody understands it, keeping that definition in the mind. If you have a mechanical engineering, a mechanical energy, everyone understands what the meaning of the mechanical energy. But in social science, any variable which you have, let's say reasoning, everyone does not understand the word reasoning in the same way. If you have a stress, everyone does not understand the stress in the same way. The people from medical science, they will have a different definition of stress. Those who are not from medical science, they may have another definition. So that means in social science and humanities, whatever the variable we have, there will be different definitions of it. So before you start writing your items, item is a technical term which I will be using. I cannot use questions because question will be very appropriate as far as the test is concerned. The statement is very appropriate as far as the scale is concerned. So I will use the word, one word which can be used for any type of tool, and that word is item. So the first important step of developing the tool is operational definition. That whatever the variable you have and you want to develop a tool, you must give the operational definition. What is the meaning of operational? Operational definition means the definition which is in terms of observable and measurable. Operational definition refers to observable and measurable terms. So if you are writing the definition in such a way so that somebody can measure as well as observe, observe as well as measure. Here measure word I am using as a general word, not as a technical word. So therefore observational operational definition means observable and measurable. Observable and measurable terms. So when you write the definition like this, then that definition will be called the operational definition. I write
Let us say there is a war. Now I may define reasoning refers to solving 10 10 numerical ability items in 15 minutes. Now please see, here I have written numerical. So I have to write item which will test only the numerical ability. Number, not words. And here I am saying that you are giving 10 numerical ability items and time you are giving 15 minutes. If you want 20 numerical items, then you must give them 30 minutes. So this is one definition which you have written of the reasoning. Now you can take another variable and you can think of the definition. Now let me give you some hint how you get the operational definition of the variable that you have taken. Number one is you can refer to the dictionary. That there is a dictionary of education and there is a dictionary of psychology, there is a dictionary of computer science, there is a dictionary of management. So whatever is the variable, you can refer to these dictionaries and you can find out what meaning they convey to you. Number one. Number two, you can use Google to find out the meaning of that particular word. Another can be you can refer to standard books because in these books the definitions are given. When they are they want to write a chapter on personality, then the writer must be defining the personality. He may give the definition of different people, so you can find the definition from there. Or what you can do is, you can even ask those people who have been teaching that particular topic that, sir, how do you define this? Another can be that you can refer to different papers, the journals, and if in those journals the paper related to that variable for which you want to develop a tool is available, then you can get the definition from there. So these are the different sources which you can touch in order to find out or decide the definition which you want to have. Looking to all these definitions, you can coin your own definition, or if you do not want to coin your own definition, you can take any definition and you say, this is how you also want to define your variable. If I have adjustment, I may say adjustment refers to home, society, and
personal refers to home, society, and personal aspects. Technique: home adjustment, society adjustment, and personal adjustment. So these are the three areas or aspects or dimensions related to which you will be thinking of writing the item. Now, if you take this, then some other dimension will not come here. If you say peer adjustment, because you have not written in your definition peer adjustment, then you cannot take peer adjustment. You cannot write. If you want to write the items for peer adjustment, then it must be part and parcel of your operational definition. The two examples I have given, hope you have understood it. If you want, I can give one more example. Scientific attitude. Scientific attitude Abhijit ji, please keep your phone on mute mode. Mic, please. Unless I have to remove you from the meeting. Sorry, I think my mic was muted automatically. I don't know how it is. Sorry. So I'm saying I define the reasoning refers to solving 10 numerical problems in 15 minutes. So you will give 10 numerical problems and time you will give 15 minutes. If you want to have 20 numerical problems, then according to this definition, you must give 30 minutes. That will be half an hour. Now, if you have adjustment definition like adjustment refers to home, society, and personal aspects, then you will be writing some of the items related to the home adjustment, some items related to the society adjustment, and some items related to the personal adjustment. If you want to have another dimension of it, say peer adjustment, then according to this definition, you cannot write the items related to the peer adjustment because it is not the part of your definition. If you want to include that, then you have to mention. Now, I was telling you another one, say scientific attitude. I say scientific attitude refers to openness, reasoning, and way of working. Here, if I have these three aspects, then I will be writing some of my items related to openness, some of my items related to reasoning, and some of items related to the way of working. So the first step, whether you are developing a tool which is test, scale, or inventory, or whether you are developing a observation schedule or interview schedule or questionnaire, you have to have that. I don't know whether I gave you the difference between the test and the scale. Did I give you the difference between test and the scale?
Did I give you the difference between test and the scale? I think no, sir. Can you tell me the difference between test and the scale? Because I gave you this particular question, I still remember these were the two questions which I gave. The one was add 4 pens and 5 pencils, and this was the scale. In this one, I can tell whether your answer is correct or incorrect. But in case of a scale, I cannot say whether your answer is correct or incorrect because I am asking your opinion. And your means it is subjective. So therefore, I gave you the difference. I just wanted to find out whether you remember or not. So you don't remember. Please try to remember. So the main difference between the test and the scale, I told you, in the test, you can say whether your answer is correct or not. In case of scale and inventory, you cannot say whether your answer is correct or not, because you are asking not the objective answer, but a subjective answer. In essay type questions, you cannot say that your answer is 100% correct or 100% wrong. It is very difficult. So that is why I told you we have to have only multiple choice type of item or objective type of item. Anyway, the first step I have completed. The second step is that you have to write the item. So item writing. And when you are writing the items, you have to keep some points in the mind. So points to be kept in the mind. While writing items, ये आइटम्स लिखते वक्त कौन कौन से पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1, कि यू हैव टू कीप इन द माइंड द टारगेट ग्रुप. कि आप जो वो टूल बना रहे हैं वो किस होना चाहिए, कि वो जो ग्रुप है वो कौन सा है. तो आप उसकी एज के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो जो टूल आप बना रहे हैं वो किस एज के लोगों के लिए बना रहे हैं. वो टूल जो आप बना रहे हैं वो उनका एजुकेशनल लेवल क्या है. आप जो टूल बना रहे हैं वो गांव के लिए है या शहर के लिए है. सो रेजिडेंशियल बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए जो टूल बना रहे हो, जिनके लिए बना रहे हो, वो किस लैंग्वेज, whether that will be English medium, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil, कन्नड़, कौन सी लैंग्वेज में आपको बनाना है. तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जिस टारगेट ग्रुप को आपके माइंड में है कि टूल आप यूज बना रहे हो, उसकी ये आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए. फिर जब आप जो लैंग्वेज डिसाइड करते हैं, इसके अंदर
आपको पता होना चाहिए कि which words to use. कुछ ऐसे words हैं for which you do not have one particular meaning. You have many meanings, at least more than one. So you should not write or you should not use those words which give you more than one meaning. Because if you are writing those words, then I will get one meaning, you will have your own meaning. So your response and my response cannot be compared. Why? Because you have given your response by taking one particular meaning, and I have given my response by taking another meaning. But our responses can be compared only and only if you are also taking the same meaning and I am also taking the same meaning. Such type of words are called double-barreled words. So do not use double-barreled. Do not use double-barreled words. Do not use vague words. Vague words such as high, low, more, less, greater, shorter. Such type of words are vague words. Because high, what is the meaning of high? Will you say 10 feet high or 20 feet high? No, these are vague words. These words should not be used. So do not use double-barreled word. Do not use vague words. In one sentence, there should be only one meaning. One item should include one technical words only. For example, if I have something like this, if I have something like this, okay, if I have something like this, research methodology is useful and difficult. If I'm saying this and I say agree, undecided and disagree, I'm sure that if you give your answer, if suppose you are saying undecided, does it mean you are undecided about the usefulness of the research methodology or difficulty level of the research methodology? If somebody says that agree, do you agree to the useful or difficult or both? It's very difficult. So such type of item we should not try. In place of this, we must write the two items. And here I say that research methodology is useful. I say that, and here I say research methodology is useful. Now, when I am doing this, then now whatever the response a particular person is giving,
I can understand his response, because now it gives only one shape. So the one item should include one technical word. Useful is a technical word. So I have written difficult is a technical word. I have written only that. Then another is that we have to write the items, double the number required. Suppose I decide that I want to have 20 items. If I want to keep only 20 items, then I must write 40 items. So write items, write double the number of items. If you require 20, then you have to write 40. If you require 30, you have to write 60. Why? Because some of the items, as you proceed further, may be rejected, may be discarded because of one reason or another reason. I will that later on. So therefore, you have to think of writing. If you are developing a test and if you want to keep 15 items, then you must start with 30 items. If you are developing any inventory and you want to have 20 items, then you should start with 40 items. So this is what is the meaning of it. Another is in case of scale, write both positive and negatively worded items in equal number. I have seen many scales where majority of the items are positively worded. Whatever you do, your finding will always be positive. Why? Because you cannot have neutral. In order to have neutral position, your positively worded item and negatively worded item must be equal in number. So if you want to have 35 items in the scale, then you instead of 35, either you should have 34 or you should have 36. If 34, then 17 items must be positively worded and the remaining 17 items must be negatively worded. This is important. And large number of the tools which are available in India, you will find that they are weak on this particular aspect. I have seen plenty. Then another is that in case of scale, write one filler item. Such as, why am I saying that? Because in case of a scale, there is a tendency that the respondent may keep on putting tick mark on sometime A, sometime U, sometime D, and like that, without reading.
Now, if you want to find out whether the responses given by the people, they are the genuine responses. What the meaning of genuine? Genuine means have they read the item before giving the response? If the answer is yes, then it means it is all right. But if the answer is no, then how will you find it out? So I always say write one filler item. What is a filler item? Filler item is something like this. I am giving you the example that you may write one statement like this. I am not a human being. And if the person is saying agree, that means he has not read your statement. If he says undecided, that means he has not read it. Or if you like, you can write another statement. I am not responding. Now, such items are called filler items, and these items you will use in order to discriminate between the responses which are the genuine responses and which are not genuine responses. But when you do the scoring, then you will not score the responses of this particular item. I have done one small research and I have used items like this, and I found that I developed one of the scale and I sent it through online, and it was sent to roughly 500 people. And out of 500 people, when I analyzed their responses, 48.67% of the people responses were discarded. I repeat, 48.67% of the responses were discarded because they had said yes, either agree or undecided. I had a strongly agree, undecided. Disagree, strongly disagree. 5 points. So you can weed out those responses which are not the genuine responses, so that you can do. Now, in case of test, write items keeping in mind the difficulty level, you have to write some items which are very difficult, some items average difficulty, and some items low difficulty. It depends upon the purpose for which you are developing the tool. I'll give you a simple example that if you see IIT entrance examination, the physics paper, and you see any university annual examination in physics. In the university, the annual examination or semester system examination, the purpose is that the student should pass. But in case of IIT entrance examination, the purpose is not to pass. The purpose is to select the best people. Those who have best understanding in physics, best understanding in mathematics, and best understanding in chemistry.
PCM. Now this is how you have to keep in mind the difficulty level. Then you have to keep in mind the discrimination. That it should be able to discriminate those people who know and those people who do not know. Then another will be that there will be different types of items. And the content coverage. These are some of the aspects which you have to keep in the mind when you are developing a test. Okay, so these are some of the quick tips I'm giving you when you are writing the items. So you have to keep these points and some other points in the mind. Now, once you have written the items, then the next step is the step number 3. The first step is operational definition. The second step is the item writing. And now the third step is a tryout. This tryout will be of two types. One is called initial tryout and another is called the final tryout. The main purpose of the initial tryout is to judge each item from language point of view. That is whether the item has a vague word or not, or whether a item has got the double-barreled statement or not. So you can see it from the language point of view. And then next important is you have to judge each item keeping in mind the operational definition. Judge each item keeping in mind the operational definition. So you have to see that whether this particular item can assess what you want to assess or not. Now these are the two important consideration of doing the item analysis. Is the initial tryout. In the final tryout, the main purpose is to establish reliability, validity, and norms. Now this is the purpose of the final tryout. Now let me take you to the initial tryout first. So I am taking you the initial tryout. I am explaining you the initial tryout first. The initial tryout. Now initial tryout, this is the purpose. So in this one, what you have to do is
That number one is that you have to have the expert trial. Expert tryout. Now, who is an expert? An expert is one who has been teaching that particular subject to which the variable belongs. If the variable belongs to economics, then he should be teaching economics. If the variable belongs to solid state physics, then he should be teaching solid state physics. That is the meaning of an expert. And another expert may be one who has conducted researches using the same variable for which you want to develop a tool. The third category of expert might be such who has written books. So one expert who has written books, another expert who has developed the tool, and another expert who has been teaching. These are the experts. And how many experts you should have? Let me tell you. Approximately, the number I am giving you is 50. That approximately 15 experts you should have. These 15 experts will belong to different places all over the world. If you are taking those experts who do not belong to your own country, then you can approach them either through email, or through the post. These are the two. And these days, because people are connected through email, so maximum people will be using the email. So you can send your operational definition and you can send your items to the expert through mail. But those experts who are not connected through email, if they are the expert in India, because outside will be very difficult, will be very costly. So in India, those people who are not connected with email, if you want to request them to examine your items, then what you can do is that you can send them your tool along with the instructions in one envelope, and in that envelope you will put one more envelope. On that envelope you write your name and you also put the stamp. Why? So that the expert need not to pay from his own pocket. अगर वो अपनी जेब से पैसा लगाएगा तो कोई भी ऐसा एक्सपर्ट बहुत कम मिलेंगे जो अपनी जेब से पैसा लगा करके आपका काम करेंगे। तो एक तो वो आपका काम कर रहे हैं क्योंकि वो अपने ऑब्जर्वेशन दे करके वो पोस्ट करने तो उनको जाना ही पड़ेगा, तो इतना तो उनको काम करना ही पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि या Malik, please switch on mic once you get this.
म्यूट कीजिए प्लीज। सौरभ खान जी, आप म्यूट कर सकते हैं क्या अपने आप को बेटा? मैं सर वो कोई पार्टिसिपेंट बोल रहे थे, उनको म्यूट करने के लिए बोल रहा था मैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जी सर। सौरभ खान तो सर चेयरपर्सन है जो है आज के हमारे। कोई बात नहीं, थैंक यू। तो ये जो एक्सपर्ट होंगे, आप इनको क्या करोगे? आप इनको अपनी ऑपरेशनल डेफिनेशन भेजोगे और आइटम भेजोगे, और आप इनको ये रिक्वेस्ट करोगे कि आप ईच आइटम की वर्ड पढ़ लीजिए, और ईच आइटम की वर्डिंग पढ़ करके दे मस्ट फाइंड आउट वेदर this particular item can assess what is expected from the operational definition. तो इसका मतलब है कि judge each item in the context of operational definition. This is the one. Number two, judge each item from language point of view. ताकि किसी आइटम में कोई वेग वर्ड तो नहीं है, कोई आइटम डबल बैरल्ड तो नहीं है। तो जज ईच आइटम फ्रॉम लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपने हर आइटम को, आपने जज को ये कहा, तो उन्होंने आपकी इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ ली और आपके हर आइटम को पढ़ लिया। अगर आपने मान लीजिए टोटल आप 20 आइटम लेना चाहते हैं और आपने 40 आइटम लिखे हैं, तो हो सकता है कि ये 40 आइटम में से जो एक्सपर्ट ये कहें कि 5 आइटम आपके ठीक नहीं हैं और वो उन्होंने चेंज भी नहीं किए हैं क्योंकि चेंज नहीं हो सकते, तो अब आपके 35 आइटम रह गए। जो 35 आइटम एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये ठीक है। अगर किसी एक्सपर्ट ने किसी भी आइटम पे कोई चेंज किया है, तो आपको जैसे ही एक्सपर्ट्स की ऑब्जर्वेशन आपके पास आती हैं, तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि क्या किसी एक्सपर्ट ने इंस्ट्रक्शंस के बारे में कोई सजेशन दिया है क्या। अगर 15 में से, वैसे आप 15 में से 15 के रेस्पॉन्सेज आपके पास आ जाते हैं तो आप काफी लकी हैं। वैसे कभी भी 15 के 15 रेस्पॉन्सेज नहीं देंगे, आपको कम आएंगे। कई बार आपके पास रेस्पॉन्स नहीं आते हो, आप उनको रिक्वेस्ट करते हो, वो फिर भी नहीं भेजते हैं बिकॉज ऑफ वन रीजन और अनदर, कुछ भी हो सकता है। तो देयरफॉर अगर आपको 15 में से 10 एक्सपर्ट्स के आगे, तो 10 एक्सपर्ट्स के रेस्पॉन्सेज को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि इंस्ट्रक्शन पे किसी एक्सपर्ट्स ने कुछ कहा है, अगर एक एक्सपर्ट ने भी कोई सजेशन दिया है तो आपको उसके सजेशन को ध्यान में रख करके इंस्ट्रक्शंस को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप समझते हैं कि इस एक्सपर्ट ने जो कहा है वो ठीक है, तो हालांकि एक ही एक्सपर्ट ने कहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए क्योंकि आप भी उससे सहमत हो। अगर ऐसा है, कोई ऐसा आइटम है जिसपे ज्यादा एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इसमें इसकी बजाय ये लिखना आपको चाहिए, आपको वो चेंज करना पड़ेगा।
तो जब आपके पास में एक्सपर्ट ट्राई आउट हो जाए और उससे जो आइटम आए और जो आइटम में जो आपको चेंजेस करनी है वो चेंजेस कर लीजिए। और जो अब आपके आइटम है, मान लीजिए 35 आइटम्स आ गए और इंस्ट्रक्शन, इन 35 आइटम्स को लेकर के अब आप, एक दूसरा है जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल ट्राई आउट। जरा स्पेस बनाना, अब आपकी आएगी इंडिविजुअल ट्राई। इस ये इंडिविजुअल ट्राई आउट आपकी इनिशियल ट्राई आउट का ही हिस्सा है। तो जो आइटम्स आपके एक्सपर्ट ट्राई आउट से सिलेक्ट होके आगे, अब वो आप इंडिविजुअल ट्राई आउट में जाते हैं। इंडिविजुअल का मतलब क्या, अभी मैं बताता हूं। और इसमें कितने लेंगे, अप्रोक्सीमेटली आप 25 लेंगे। मान लीजिए आप एक स्ट्रेस स्केल डेवलप करना चाहते हैं और स्ट्रेस स्केल आप डेवलप करना चाहते हैं एक कॉलेज के टीचर्स के लिए, और आप मान लीजिए हरियाणा के कॉलेज के टीचर्स के लिए करना चाहते हैं। तो जो इंडिविजुअल ट्राई आउट है, इस इंडिविजुअल ट्राई आउट में आपको हरियाणा के कॉलेजेस में, अगर वो प्राइवेट कॉलेज है या गवर्नमेंट है, आप दोनों के लिए, तो कुछ आपको प्राइवेट कॉलेज से लेने पड़ेंगे, कुछ आपको गवर्नमेंट कॉलेज से लेने पड़ेंगे, कुछ आपको मेल लेने पड़ेंगे, कुछ आपको फीमेल लेने पड़ेंगे, कुछ आपको साइंस के, आर्ट्स के, कॉमर्स के लेने पड़ेंगे। तो ये 25 आप ले सकते हैं। आप अगर मान लीजिए रोहतक में है, आप रोहतक से ले सकते हैं, कोई चिंता नहीं। आप कुरुक्षेत्र में है, आप कुरुक्षेत्र के आसपास से ले सकते हैं। लेकिन ये 25 जो हैं, आपको एक टीचर के साथ में एट ए टाइम आपको बैठना पड़ेगा और उस टीचर को आप सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देंगे और पूछेंगे कि ये देखिए ठीक है या नहीं है। तो वो बता देगा कि लैंग्वेज ही बताएगा, वो लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं बताएगा। तो आप पूछेंगे कि ये ठीक है क्या, उसने कहा, फिर आप पहला आइटम देंगे, सारे इकट्ठे नहीं देना। अगर आपके 35 हैं तो आपको 35 अलग अलग स्लिप हो या पेजेस हो, उन पे आइटम लिखने पड़ेंगे। और फिर आप एक आइटम दीजिए और पूछिए कि ये ठीक है क्या। मान लीजिए उसने कहा कि ये शब्द मेरे को नहीं पता है, इसका मीनिंग क्या है, तो आपको इमीडिएटली उसी वक्त उस शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द सोच करके लिखना पड़ेगा जिसका वही मीनिंग हो जो पहले का है। और जब आपने कहा कि क्या ये शब्द ठीक है क्या, अगर उसने कहा हाँ ठीक है, तो आप अपना नोट कर लीजिए कि इस आइटम में इस वर्ड की जगह ये वर्ड एप्रोप्रिएट। और अब आप तीसरा दीजिए, चौथा दीजिए, पांचवा दीजिए। तो इसमें जब आप इंडिविजुअल ट्राई आउट करोगे तो एक व्यक्ति पर हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए, हो सकता है 1 घंटे से ज्यादा भी लग सकता है। तो एक दिन में अगर आप 3 घंटे 4 घंटे काम करोगे तो जब हो सकता है कि आप 3 लोगों से डेटा लो, क्योंकि कोई कहीं का होगा, कोई कहीं पे होगा, तो आपको आने जाने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए इंडिविजुअल ट्राई आउट हम बहुत बड़े नंबर पर नहीं करते। तो ये आप कर लीजिए और ये करने के बाद में
फिर आप लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि पहला आइटम क्या हर एक को समझ में आ गया, क्या कोई कठिनाई तो नहीं थी. If there was no problem, then item number 1 is okay. Then item number 2, any student or any participant had any problem on any word or sentence. मान लीजिए एक सेंटेंस है, मैक्सिमम ने कहा कि नहीं ये वेग है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो दिस सेंटेंस मस्ट बी टेकन आउट ऑन द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल ट्रायल. अब आप तीसरे आइटम पे चले जाइए, तो ईच आइटम को आप एनालाइज कीजिए. एनालाइज ईच आइटम फ्रॉम लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने वो ऑपरेशनल डेफिनेशन को लेकर के भी पॉइंट आउट किया था और लैंग्वेज को, लेकिन ये ग्रुप है, इनको ये एक्सपर्ट नहीं है, तो केवल लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप इसकी एनालिसिस करेंगे. और यहां से अगर कुछ आइटम आपके और रिजेक्ट हो गए, मान लीजिए 5 आइटम और रिजेक्ट हो गए, तो अब आपके पास में 30 आइटम रहे. तो इसलिए आपको आइटम ज्यादा लिखने. देखिए आपको मालूम है कि महिला जब भी खाना बनाती है तो वो हमेशा घर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाना बनता है, ज्यादा बनता है. वो इसलिए बनता है कि हो सकता है किसी फैमिली मेंबर्स को ज्यादा भूख हो तो वो थोड़ा ज्यादा खाए, या हो सकता है किसी दिन अच्छा खाना बन जाए. वैसे कोशिश तो करते हो कि अच्छा ना बने, बट हो सकता है या अनजाने में कई बार अच्छा खाना बन जाता है तो ज्यादा खाते हैं, तो इसलिए कई बार ज्यादा बनाना पड़ता है. तो इसी तरह से हमको आइटम ज्यादा लिखने पड़ेंगे क्योंकि बीच में कुछ रिजेक्ट हो सकता है, जैसे अभी मैंने बताया. तो अब यहाँ से जो आपके 30 आइटम आए, वो 30 आइटम लेकर के अब आप जाएंगे, उसको हम कहेंगे ग्रुप ट्रायल. ग्रुप ट्राई आउट करेंगे, और इस ग्रुप ट्राई आउट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये आइटम एनालिसिस. मेन ऑब्जेक्टिव इज आइटम एनालिसिस. और ये जो हम आइटम एनालाइज करते हैं, in case of scale and inventory, item analysis is to be done on the basis of only discrimination. आपको केवल डिस्क्रिमिनेशन के ही डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के बेसिस पे ही आपको आइटम को एनालाइज करना पड़ेगा कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है. जैसे दोस्तों, आप भी जब सुबह नहाते हो और कपड़े पहनते हो, तो कपड़े पहन के नहा के हम कई बार शीशे के सामने खड़े होके देखते हैं कि हाँ ठीक है या नहीं है. यानी हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि नहाने से पहले कैसे लगते थे, नहाने के बाद कैसे लगते. आप कई बार अपने कपड़े पहन के आप शीशे के सामने 360 एंगल से घूमते हैं, ये देखने के लिए कि मेरी ड्रेस कहीं से ऊपर या नीचे, किसी ने साड़ी पहनी हो
तो कई बार प्रॉपर नहीं होती है, तो वो 360 एंगल से घूमना पड़ता है। आप डिस्क्रिमिनेट कर रही हैं कि कहीं ठीक है या नहीं है। अगर वो ठीक है तो बढ़िया बात है, अगर ठीक नहीं है तो आप उसमें करते हैं। कई बार आप जब खाना बनाते हैं, कोई मेहमान आता है, तो उसमें आप बीच बीच में चखते हैं, ये पता लगाने के लिए कि वाकई में इसमें मिर्च तो ज्यादा नहीं है, सॉल्ट तो ज्यादा नहीं है, टेस्टी है या नहीं है। तो आप देखिए, यहाँ भी आप इसलिए टेस्ट किया कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे जीवन का एक हिस्सा है। कई बार आप देखते हैं, जब आप कॉलेज जाते हैं तो कई बार आपकी फ्रेंड कहती है, क्या आप तो आज बहुत अच्छी लग रही, यू लुक वेरी फ्रेश। कई बार घर में आते हैं तो घर वाले कहते हैं, यू सीम्स टू बी वेरी टायर्ड। तो वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका चेहरा देख करके वो पता लगा सकते हैं कि आप थके हुए हो या नहीं थके हुए। कई बार आपके पेरेंट्स आपको देख करके कहते हैं, क्या आज किसी से झगड़ा हो गया क्या आते आते? तो आप कई बार बताते, हाँ आते आते क्या हुआ है। तो वो देखिए, उन्होंने आपके चेहरे को देखा और चेहरा देख करके वो पता लगा लिया कि आप कुछ गड़बड़ है। ये डिस्क्रिमिनेशन, और ये हम लाइफ में करते ही हैं। जो आजकल एजुकेशन में एक ऐसा चल रहा है कि सबको पास कर दो। अगर भाई सबको पास कर दो तो डिस्क्रिमिनेट कहाँ हुआ? और डिस्क्रिमिनेशन तो हमारे जीवन का हिस्सा है हर पहलू पे। जैसे हम सुबह उठते हैं तो कई बार हम कहते हैं कि यार रात को नींद अच्छी नहीं आई, आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। या आप तो आपके फैमिली मेंबर्स कहते हैं, क्या कुछ माइंड में कुछ चल रहा था क्या, जिसकी वजह से आप सो नहीं पाए, या कहीं दर्द था क्या, या बेड पे कोई ऐसी चीज पड़ी थी जो आपको ज्यादा परेशान कर रही थी। थिंग्स लाइक दिस जो बात। तो डिस्क्रिमिनेशन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। और अगर डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो हम एग्जाम लेने की जरूरत नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी डिस्क्रिमिनेट करता है कि आपका इतना ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए और आपका इतना है। अगर आपका भी नॉर्मल है तो कहेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नॉर्मल नहीं है तो फिर कहते हैं आपको बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर आपका अपर लेवल है वो काफी हाई है। एनीवे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये केवल हम स्केल और इन्वेंट्री में ही करते हैं। इन केस ऑफ टेस्ट, item analysis is to be done on the basis of item analysis is to be done on the basis of discrimination index, as well as difficulty level. तो डिस्क्रिमिनेट, अगर आइटम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, मान लीजिए एक क्वेश्चन है, उसका सबका करेक्ट आंसर है, तो क्या ऐसा क्वेश्चन रखना चाहिए क्या? एक क्वेश्चन है जिसका हर स्टूडेंट रॉन्ग आंसर देता है, तो क्या ऐसे सवाल रखने चाहिए क्या? क्योंकि हर एक ने सही आंसर दिया तो डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं रहा है, और हर एक का गलत आंसर है तो वो डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं रहा है। अगर वो हर एक का सही आंसर है, इसका मतलब वो क्वेश्चन काफी आसान है।
डिफिकल्टी लेवल काफी लो है। और अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें आपका आंसर गलत आ रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब वो आइटम, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। तो हमको जो आइटम एनालिसिस करनी होगी वो इस आधार पे करनी होगी। अब ग्रुप ट्राईआउट के लिए हम जो साइज है, जो ग्रुप लेते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली अब ये जो मैं अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं, आप इसमें चेंज कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, डिपेंडिंग अपॉन योर पॉपुलेशन साइज। अगर आप में से कुछ लोग बाग स्पेशल एजुकेशन में काम करते हैं और स्पेशल एजुकेशन में अगर आप रिसर्च करते हैं और कोई टूल डेवलप करना चाहते हैं, तो वहां पे आपके पास में पॉपुलेशन बहुत बड़ी नहीं होती है। अगर आप ब्लाइंड पे काम करना चाहते हो, बहुत ज्यादा संख्या ब्लाइंड लोगों की नहीं मिलेगी, स्टूडेंट्स की नहीं मिलेगी। अगर आप एमआर पे काम करना चाहते हैं तो एमआर मीन्स मेंटली रिटार्डेड, तो बहुत ज्यादा मेंटली रिटार्डेड बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। तो वहां पे ग्रुप का साइज छोटा है, तो वहां आपको यहाँ पे छोटा ही लेना पड़ेगा। अब अगर आप ये टीचर्स के लिए बना रहे हैं, जो हरियाणा के टीचर्स के लिए है, तो आपने 25 टीचर्स को तो यूज कर लिया, इनको ग्रुप ट्राईआउट में आप यूज नहीं कर सकते। अब आप अगर मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 500 आप टीचर्स लेते हैं, तो ये जो 500 टीचर्स हैं, आप जो सिलेक्ट करोगे, तो मुझे नहीं मालूम कि आपको पता है कि कौन सी सैंपलिंग टेक्निक ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगी, जो कि आपके जेंडर को भी रिप्रेजेंट करे, जो कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट करे, जो कि आपके प्राइवेट और गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करे, जो आपके अर्बन और रूरल को भी रिप्रेजेंट करे। आपको यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग लगानी पड़ेगी या स्ट्रैटिफाइड प्रोपोर्शनेट रैंडम सैंपलिंग लगानी पड़ेगी। तो आपको ये 500 लोग बाग ऐसे सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो कि जेंडर को भी रिप्रेजेंट करे, जो सब्जेक्ट भी रिप्रेजेंट करे, जो एरिया भी रिप्रेजेंट करे, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी रिप्रेजेंट करे, वो सब रिप्रेजेंट। तो ये अलग अलग जगह से, आप एक ही इंस्टीट्यूट से सारे नहीं ले सकते हो। आप किसी कॉलेज में गए, वहां से आपने 20 लिए, किसी दूसरे कॉलेज में गए, वहां से आपने 30 लिए, या कहीं गए वहां से 25 लिए। अब आप क्या करोगे कि आपने जो आइटम आपके इंडिविजुअल ट्राईआउट और एक्सपर्ट ट्राईआउट से अप्रूव हो गए हैं और अब वो ग्रुप ट्राईआउट के लिए है, तो ग्रुप ट्राईआउट के लिए आपको जो वो टूल है उसका एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और वो स्ट्रक्चर ये होता है कि आप उसके ऊपर वो टूल का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ टूल लिखेंगे। जो भी कुछ है, और आप उसके नीचे नेम ऑफ डेवलपर लिखेंगे। इसने वो टूल बनाया है। उसके बाद में आप यहाँ पे उसकी जो सामान्य जानकारी आप लेना चाहते हैं, जैसे आप उनका नाम लेना चाहते हैं तो नेम लिख लीजिए, आप उनका जेंडर लेना चाहते हैं आप जेंडर लिख लीजिए, आप उसका नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट लेना चाहते हैं वो लिख लीजिए, आप उनकी क्वालिफिकेशन चाहते हैं वो लिख लीजिए।
जो जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप लिख सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ पे एक ऐसी लाइन डाल करके और यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन लिखें। इस इंस्ट्रक्शन में आपको पता, आप बताएंगे कि ये टूल ये मेजर करने, ये असेस करने के लिए बनाया है और इसमें इतने आइटम हैं और आपको अपना रेस्पॉन्स इस तरह से देना है और आपको इतना टाइम मिलेगा। और फिर आपको लिखना है कि आपके रेस्पॉन्सेस, योर रेस्पॉन्सेस विल बी केप्ट confidential and used only for research work. I repeat, क्योंकि ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, that your responses will be kept confidential and used only for research work. तो ये आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएगी। एक बार आपने इंस्ट्रक्शंस लिख ली, उसके बाद में अब आप यहाँ पे आइटम देंगे, योर आइटम 1, आइटम 2, जैसे भी आपको आइटम को अरेंज करना है ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। तो ये आपका 2 पेज का या 3 पेज का बन जाएगा। अब इसी के साथ में आपको एक आंसर शीट भी बनानी चाहिए। क्यों? अगर आप 500 लोगों पे इसको एडमिनिस्टर करोगे तो आपको, अगर मान लीजिए अलग से आंसर शीट नहीं बनाते हो तो आपको 500 कॉपीज बनानी पड़ेगी इस टूल की। अन्यथा आप 500 कॉपी रेस्पॉन्स शीट की बना लीजिए और टूल की आप 30 बना सकते हैं, 40 बना सकते हैं, क्योंकि उसी को आप बार बार यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपने, अगर मान लीजिए आप यूजीसी का नेट एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो या CSIR यूजीसी का क्वालिफाई किया हो, वहां पे OMR जो शीट आती थी, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो शीट आती थी, वो शीट आंसर शीट थी। और यहाँ पे जो आप आइटम लिखेंगे उसके रेस्पॉन्सेज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप ही आएंगे। और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे तो आप एक रेस्पॉन्स शीट बना सकते हैं। आपको रेस्पॉन्स शीट बना लीजिए। अब आप क्या गए कि आप पहले इंस्टीट्यूट में मॉर्निंग में गए, लेकिन जाने से पहले इंस्टीट्यूट का जो हेड है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मॉर्निंग में गए और वहां पे स्टूडेंट्स को आपने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, फिर बताइएगा कि आप क्यों आए हैं, क्या पर्पस है आप, और वो बताने के बाद में फिर आप उनको इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि वो किस तरह से अपना रेस्पॉन्स लिखें। और जब उनको समझ में आ जाए तो आप एक जो आपकी रेस्पॉन्स आंसर शीट है वो दे दीजिए और बच्चों और उनको कहिए, पार्टिसिपेंट्स को, कि आप इस पे अपनी जो जनरल इंफॉर्मेशन मांगी है वो दे दीजिए। तो वो लेंगे। उसके बाद में अब आप उसको जो भी बुकलेट आपने बनाई है वो दे दीजिए और कहिए कि बुकलेट पे जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जो निर्देश लिखे हुए हैं, दे शुड रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड गिव देम सम टाइम। And after that you can ask whether all people have understood the instructions or not. If by chance there is one student who has not understood, so you should explain it. And if all of them say we have understood, then you can say now you can start giving your response.
And when they are start giving the response, you can note down the starting time on your copy. And when they complete, then they will return their response sheet to you. As soon as they return the response sheet and the test booklet to you, so on the response sheet, you can write the time. So you can find out how much time this student has taken in giving the response. And that you can calculate for everyone. Now, once you complete in one institute in the morning, then in another institute, you should go in the evening. Why? Because every time, if you go in the morning only, then your tool cannot be used by any person who wants to collect data in the evening. Why? Because during tryout, you have not tryout in the evening. So therefore, in order to take care of the time, on some of the people you are administering it in the morning and some of the people you are administering it in the evening, so that your tool can be used either in the morning or in the evening. That is what is to be done. So once you have collected the data from 500 people, then you have to do the item analysis. And how the item analysis has to be done, that now I am going to tell you. So after the group tryout, item analysis for the scale or inventory is to be done as given below. आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले आप स्कोरिंग करेंगे. आपको कैसे स्कोरिंग करना है? लीजिए मैं आपको बताऊंगा कि स्कोरिंग कैसे करना है. ये एक आइटम है, मान लीजिए आइटम है रिसर्च मेथोडोलॉजी इज यूजफुल, और यहाँ पे एग्री, अनडिसाइडेड और डिसाइडेड. दूसरा है रिसर्च मेथोडोलॉजी इज डिफिकल्ट, और आपने यहाँ कहा एग्री, देन आपने कहा अनडिसाइडेड और फिर आपने कहा डिसाइडेड. जो पहला आइटम है ये पॉजिटिव है, बिकॉज रिसर्च मेथोडोलॉजी इज यूजफुल. और नेक्स्ट आइटम है जो दूसरा आइटम है वो निगेटिव है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी इज डिफिकल्ट. तो फॉर पॉजिटिव आइटम items, the scoring is that A will be given the 3 score, U will be given the 2 score, and B will be given the 1 score. अगर आपका पॉजिटिव आइटम है और अगर आपका एक आइटम है या फॉर पॉजिटिव आइटम स्कोरिंग, अगर आपका ये स्ट्रांगली एग्री को आप 5 दोगे और
एग्री को आप 3 दोगे, 4 दोगे और अनडिसाइडेड को आप 3 दोगे और डिसएग्री को आप 2 दोगे और स्ट्रांगली डिसएग्री को आप 1 दो। ये अगर आपने 3 पॉइंट करना है या 5 पॉइंट करना है। इंपॉर्टेंट ये है द डिफरेंस बिटवीन एग्री एंड अनडिसाइडेड and the difference between undecided and disagree must be equal. यहाँ पे 3 minus 2 1 है, 2 minus 1 8 है, 1 है। अगर आप यहाँ 2.5 लिखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 1.5 लिखना पड़ेगा ताकि इनके बीच में डिफरेंस हाफ हाफ है, इक्वल होना चाहिए, चाहे वो 1 हो या आधा हो या 3/4 हो या 1/4 हो, जो भी कुछ हो। अब यहाँ पे अगर आपने ये 5 पॉइंट स्केल है आप तो यहाँ 5 4 3 2 1 दिया है, लेकिन नेगेटिव के लिए ये हो जाएगी। एंड फॉर नेगेटिव आइटम्स स्कोरिंग इज यहाँ पे 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। यहाँ पे ये 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे A का 3 है और यहाँ पे इस सेकंड में D का 3 है। ये पॉजिटिव आइटम है और ये नेगेटिव आइटम। नेगेटिव आइटम में जब डिसएग्री होता है तो इसका मतलब है वो एग्री हो गया। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसलिए जो पॉजिटिव आइटम में 3 पॉइंट स्केल में अगर यहाँ 3 दिया है तो नेगेटिव में वो डिसएग्री में 3 आएगा। अब यहाँ 5 पॉइंट स्केल है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव में स्ट्रांगली एग्री में आपने 5 दिया है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव आइटम है। तो यहाँ पे आपने स्ट्रांगली डिसएग्री में 5 दिया। ये चीज इंपॉर्टेंट। चलो मैं इसको पहले पूरा ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब यहाँ पे ये 5 पॉइंट है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट। तो ये स्कोरिंग है। एक बार आपने स्कोरिंग कर लिया तो आप अपने, अगर आपके पास में 500 है तो आपके पास में 500 स्कोर्स आ जाएंगे। हर बच्चे का एक एक टोटल स्कोर आएगा। तो यू विल गेट टोटल score for each subject. अब आप now on the basis of the score either in order or आप इसको या तो घटते क्रम में रख लीजिए या बढ़ते क्रम में रख लीजिए। अगर मान लीजिए मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है
if I have arranged it in the descending order, तो मेरा जो यहाँ पे जो स्कोर आएगा वो हाईएस्ट होगा, इसके नीचे स्कोर आएगा वो इससे कम होगा, इसके नीचे स्कोर आएगा इससे भी कम होगा, इसके नीचे आएगा इससे भी कम होगा। तो मैं घटते क्रम में जमा रहा। तो हम क्या करेंगे कि जो 500 मेरे पास में है, इस 500 का मैं 27% ऑफ 500 लेना, 27% ऑफ 500, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 135 हो जाएंगे, क्योंकि हाँ 135। तो आपको टॉप के 135 लेने ही यहां से। तो सिलेक्ट टॉप 135 सबनेट्स, और ये जब आप टॉप के 135 लोगे तो इसको ये अपर 27% हो जाएगा। अब आप नीचे से सिलेक्ट करो और नीचे से आप करो, और ये आप यहाँ पे लीजिए कि बॉटम 27% और बॉटम 27% 135 होंगे, बॉटम 27% ऑफ 500 जो 135। अब आप नीचे से काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3, और यहाँ पे 135, ये दो एक्सट्रीम ग्रुप आपके बन जाएंगे। तो इसको हम कहेंगे बॉटम 27%। अब आपने जो बीच में रह गए 46% केसेस, उसको आप हटा दीजिए, बिकॉज दे विल नॉट contribute anything in the discrimination because the scores are quite close to each other. अब यहां से आपके दो ग्रुप आ गए, और अब आप एक इस तरह से टेबल बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये आपका आइटम नंबर है, ये आपका आइटम पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ओके, ये मान लीजिए तीसरा है, ये मान लीजिए चौथा है, ये मान लीजिए पांचवा। तो अगर आपके आइटम 30 हैं तो आपके पास में ये 30 आ जाएंगे। ये आपका 30। तो अब आप यहाँ पे ये आपका टॉप 27% है, यहाँ पे आप मीन निकालेंगे कि जो आपके 135 स्कोर्स हैं पहले आइटम पे, उसका क्या मीन था। एंड लेट अस से अगर ये मीन मैं टी बता दूं टॉप ग्रुप का, और इसी ग्रुप का आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, ये भी टॉप ग्रुप का है, तो ये आपका है टॉप 27%। और इसी तरह से आप निकालेंगे कि बॉटम का है,
आप यहाँ पे ये बॉटम आया, ये भी बॉटम आया। अब इन दोनों मीन को आप टी टेस्ट लगा दीजिए, आपकी एक टी वैल्यू आ जाएगा। मुझे मालूम है कि आपको टी टेस्ट मालूम है। अब आप यहाँ पे अगर एक और आप यूज करना चाहते हैं तो एक और आप डाल सकते हैं यहाँ पे कॉलम, इंसर्ट कॉलम, एंड आप यहाँ पे रिमार्क लगा। अगर आपकी टी वैल्यू ये नॉट सिग्निफिकेंट है तो यहाँ पे आएगा रिजेक्ट। इसका मतलब है कि ये आइटम अपर और लोअर में डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, तो देयरफॉर आप इसको ये बॉटम 27% है, मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, और मैं यहाँ पे लिख दूं ये बॉटम 27%। अगर इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब कि मीन टी और मीन बी दोनों डिफर करते हैं, तो ये आइटम सिलेक्टेड। तो जहां जहां आपकी टी की वैल्यू सिग्निफिकेंट आए वो आइटम आपका सिलेक्ट हो गया, और जहां जहां नॉन सिग्निफिकेंट आए वो आइटम रिजेक्ट हो गया, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है। So thank you very much, because I have another webinar and it's already, I have taken 7 minutes more. So thank you and thank you. Any other question you want to ask, quickly ask the question, put it in the chat box. Otherwise, thank you very much. I have Thank you very much, sir. Yes, dear participants, if you want to ask regarding any of the things which I have discussed today in the third session, you are free to ask, please. Yes, it has to be done for the each item. Yes, you can even write down your query in the chat box also, or as well as you can ask also through the mic. There is a question from Chandani, sir. Never 2-point scale. The point scale, whenever you have a scale, it has to be always in the odd number, either 3 point or 5 point or 7 point or 9 point, because there must be one undecided or neutral. So you cannot have 2-point scale. That is wrong. Okay, so thank you very much. Let me take permission. So thank you, Dr. Huda. Thank you, sir. Thank you so much. It's entirely our honor and privilege, sir. Thank you so much. Okay, thank you very much, sir. And sir, request you to, sir, please end the screen share so that I can take a picture of the session. Stop presenting, sir, please. And I request to the participants also to switch on your videos for a few minutes only, so that I can capture the movement or the picture of the day on the third session. Sir, it's a request to you also to switch on video. That's a request to all the participants. Please switch on your Dr. Javed, Abhijit ji, Dr. Nimai, Bala Sahib, Indra, Archana, Amrita, Narendra, Parvez. I hope you are listening to me, all of you. So let's make a very good picture of today. Rajesh sir, good afternoon. नमस्कार सर, नमस्कार।
has done. Thank you. Thank you very much, sir. And thank you all the participants for being a very good audience in the session. Thank you, sir. Thank you very much. And you have been Thank you so much, sir. Such a informative. with a passion. नमस्कार नमस्कार सर. नमस्कार 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 सर. बड़ा साहेब जी नमस्कार. हाँ नमस्ते सर जी नमस्ते. And again, I would like to thank Team FDC that they have given me a chance to be the chairperson, and really it's a nice feeling to be chairperson. Though we had a very big group, so it was not possible to be to make everyone the chairperson of the session. But I hope that all of you are enjoying and getting surely some information from the session. सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा आपकी चेयरमैनशिप में. बहुत अच्छी तरह. थैंक यू सर. बहुत बहुत धन्यवाद सर. Director ma'am, should I end the meeting or you want to discuss something? कुछ नहीं है सर मेरी साइड से. तो आपका प्लेटफॉर्म है, जैसे आपको ठीक लगे. मेरी साइड से सौरभ सर अभी वेट कर रहे थे, अटेंडेंस फिल नहीं किया लोगों ने. Okay. Attendance link on the chat box also, as well as on YouTube link also. And still, if someone is left, then they can message me. I'll putting my phone number on this chat box. If someone is left, they can message me. I'll share them personally also. These are my numbers. Rasta ma'am, okay, I'll share again. You see the chat box. The link is there. Yeah, ma'am. What time we need to submit the assignment? 22nd or 24th? सर 24 तक कर सकते हैं आप. 24th. So is there will be some plagiarism check also of the content? Sir, it's not for publication. It's just for arranging the things and compiling it in your own words. Okay. That's okay. Might be some of the participants would be thinking that it would be checked plagiarism, plagiarism check would be done with the content. So yeah. We are not going for publication. Yeah, it's for information to the participants. Then you can take help from the book also, and the ideas from internet also you can take for making assignments. I think, ma'am, everybody has done with attendance also. I request to participants जिनकी अटेंडेंस हो गई वो लीव कर सकते हैं, क्योंकि अदर पार्टिसिपेंट्स जो यूट्यूब पे